Namaskar. Good morning to all of you. I welcome you all on behalf of EdIndia Foundation in today's session. आज हमारे साथ जो भी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से स्टूडेंट टीचर्स जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं. And the topic for today, as you are all aware, is needs and challenges of teaching English. अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष में why do we learn English or why do we teach English? Because as we all know, we are Indians and we have our own languages. We don't have English as our mother tongue, but still we use English. So we need to understand what is the reason behind that. And the second is कि अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की पूरी कोशिश के बाद भी we have certain problems, certain challenges. So आज के सेशन में we will try to find answer to some of the questions. The first question will be that why do we need English in India? Is it a political reason? Is it sort of economic reason? Is it academic reason? क्या कारण है, क्यों पढ़ते पढ़ाते हैं हम हिंदुस्तान में अंग्रेजी? The second issue that we will try to understand today will be कि अंग्रेजी सीखने में और हिंदी सीखने में या अपनी कोई भी जो भी हमारी मदर टंग है उसको सीखने में कोई फर्क होता है क्या? And that will actually tell us the difference between acquisition and learning. These are two technical terms जो आपके करिकुलम में बार बार आता है, लैंग्वेज टीचिंग की बातचीत में बार बार आता है. So we will try to understand what is acquisition, what is learning and what are the differences between the two. तीसरा सवाल जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि why English learning is difficult, challenges क्या होती हैं, परेशानियां क्या होती हैं, क्यों despite all our efforts we find it difficult to learn English, particularly to speak and to listen. रीडिंग राइटिंग तो फिर भी हम थोड़ा सीख लेते हैं, but speaking and listening becomes very difficult for Indian students. So we will try to understand the reasons also, the challenges that are there, and then finally we will try to understand कि इन challenges को हम कैसे overcome कर सकते हैं as a student, as a teacher in the classroom. What can we do कि ये जो परेशानियां हैं, ये जो challenges हैं, इनको हम कम कर सकें या इनको दूर कर सकें. So these are the four questions that we will be talking about today. And इस पे बात करने के लिए we have Doibi with us. I welcome Doibi. Doibi works with EdIndia Foundation and she is specializing in English language teaching. आपने उनसे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे इश्यूज पे बातचीत की होगी, एंगेज किया होगा. Today we'll be listening to what Doibi has got to say about these four questions that will help us find the answer और शायद ये हमें बेहतर टीचर, बेहतर स्टूडेंट बनने में हमारी मदद करेगा. Doibi, मैं आपका स्वागत करता हूँ. Thank you, Rajesh ji. Thank you so much. And once again, I would also like to welcome all our participants, all our B.Ed students who are joining from Uttarakhand and Chhattisgarh, different colleges and universities. So a very good morning to all of you and best wishes. Thank you for joining with us. And as Rajesh ji was sharing, that today we will try to understand about the context of English language teaching in India. What are the challenges? We will try to understand or identify what kind of challenges students face, or as well as while teaching English, teachers also how teachers can solve these challenges or overcome these challenges while teaching English. So all these things are related to the classroom teaching processes, and definitely as all our participants, they are future teachers, they will be teaching in the classroom very soon. So I hope this session will be very useful for all of you.
So try to listen carefully. We will be asking lots of questions throughout the sessions. You can also share some questions or doubts in the chat box. So हम ऐसे आपको भी help करने की कोशिश करेंगे. Rajesh ji, so So, we can start our discussion. how do you plan to take us ahead in this journey? ये जो हम 4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, Right, तो right. आप किस तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं? व्हाट इज योर प्लान? जैसे भी आपने प्लान किया है, द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इस पूरे सेशन के दौरान फ्रॉम बोथ द साइड्स, I mean, Doibi will be asking questions and students will also be asking questions. And similarly, both the party will be responding to the questions or whatever comes in the session. इसके अलावा आपके मन में जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए सवाल आते हैं, feel free to write in the chat box and we will try to respond to as many questions as possible. Yeah, Daibi, please. Right, Rajesh ji. So, Rajesh ji, as you were sharing, ki, we will ask lots of questions to make it more interactive as we are connected through YouTube. So, we will be asking some questions. You can share the answers in the chat box. So, Rajesh ji, I would like to start with a poll. And the poll will be visible in the chat box also, and here also I am in the screen, the poll is also visible. So Rajesh ji, as we are talking about English language, so first of all we have to find out what are the places, what are the areas where we use English language. तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक पहला सवाल है, what language do you often use to perform the following tasks? तो यहाँ पे मैं कुछ tasks दे रही हूँ, जैसे आप सभी लोग गूगल पे सर्च करते होंगे, you search information from Google, you browse information, then we buy medicine, we usually buy medicine from the stores. Then we use computer, mobile or electronic devices. So that is also a part of our daily life. And we also follow some direction while we are traveling, we are going somewhere on the road, we follow the directions or the guidelines we see on the road. So ये इतने सारे जो काम है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, what language do we often use to perform these tasks, to complete these tasks? आप थोड़ा सोच के बताइए कि कौन से लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होता है कि आप जब भी ये सारे टास्क करते हैं, आपको कुछ पढ़ना होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना होता है या कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना होता है, कोई डायरेक्शन फॉलो करना होता है रोड पर व्हाइल ट्रैवलिंग, what language do you often use? आपके स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा, you can click on the poll and share your opinion. राजेश तो जी, दोइबी इस सवाल में ये इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात करूं जी, तो मैंने तो कोई दवाई ऐसी नहीं देखी है एलोपैथ की जिसमें हिंदी में उसका नाम लिखा हुआ हो। राइट, अधिकतर या लगभग सारी दवाइयों के नाम अंग्रेजी में लिखे होते हैं, तो वो तो अंग्रेजी में ही पढ़ता हूं मैं। मोबाइल या कंप्यूटर की बात करें तो हालांकि उसमें सुविधा तो है हिंदी की भी, लेकिन जो भी कंप्यूटर्स आते हैं, खास करके लैपटॉप की अगर बात करें, तो उसके कीबोर्ड जो आते हैं वो तो अंग्रेजी वाले ही होते हैं। अब कोई उसमें हिंदी वाला एग्जैक्टली, शायद लगा ले, चिपका ले, कुछ इस तरह की व्यवस्था तो होती है। वैसे ही मोबाइल में भी जो डिफॉल्ट ऑप्शन आता है, मैन्युफैक्चरर ऑप्शन, वो तो अंग्रेजी का रहता है। ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। डायरेक्शंस के टर्म में यस, sometimes when it is written in Hindi or in any other local language. So I'll say कि majority of the times मैं इंग्लिश ही यूज करता हूँ दोई, और ऐसा ही कुछ जवाब आया होगा एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स का भी। right. Most of our participants, they have voted English language. That is, we have received 69% vote for English and 25% for Hindi. And other language, there is 6% vote. So total 51 votes we have received out of 61 participants. तो I think definitely हम सभी समझ पा रहे हैं कि
usually to perform these kind of tasks, we usually use English language. That is the primary language we have to read or we have to use in our daily life. तो राजेश जी, आई थिंक इससे हमें समझ में आता है कि हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, थ्रू विच वी कम्युनिकेट और यूज सम प्रोडक्ट्स, यूज सम गाइडलाइंस रिटन ऑन द प्रोडक्ट्स. तो through this we can understand the importance of English in India, as English is an official language that is recognized by the government of India. काफी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. कोई इंटर प्रोविंस या आई मीन different states or different countries के साथ communicate करना है, so we have to use English language, because I think कुछ कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, वहाँ पे मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, बट बाकी जो अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया काफी वहाँ पे ट्रेड या बहुत सारे कामों के लिए कम्युनिकेशन होता है, चाइना, मलेशिया या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, इंग्लिश इज द मेन और फर्स्ट लैंग्वेज दे यूज. देन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी हायर स्टडीज के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी राजेश जी हम इंग्लिश यूज करते हैं, सो वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है. आजकल आई थिंक हमारे बीएड के हमें जो साथी जुड़े हुए हैं वो भी गूगल करके इंफॉर्मेशन या उनके नोट्स या पढ़ाई के लिए दे यूज online resources. So for that also we have to learn English language. Most of the quality content, quality resources are available in English language. So I think internet, media, science, technology, for everything we need to learn English language. So the importance of English language is very crucial. So what we can understand. So, Doibi, what you are saying is that English is a language which we study, which we use for different reasons. One of the significant reasons for Indian context is कि हिंदुस्तान में different part of the country के लोग अलग-अलग languages use करते हैं, and if they have to communicate with each other, they need some language which both of them understand, or even दो country के लोग भी, when they are talking with each other, for example, you are an Indian and you want to talk to a Chinese or Japanese, you need a common language. So that English serves as a common language, link language between two communities, two groups speaking two different languages. Besides that, science and technology, internet, media, and other sort of resources which are available, mostly they are there in English. Even our B.Ed students are aware of कि वो जब अपने किसी भी topic को जो उनके curriculum में है, when they want to study it in detail, then they need to find some material of original or good quality. Now, that material usually is available in English. Sometimes the translation is available in local language or Hindi. Sometimes even that translation is not available. So, ये English हमारे लिए for these reasons. So, that is more of an economic, academic, technological, scientific reasons that English has become important, not only for India, but even for other countries as well. So, ये तो भी हम समझ गए. Now जो दूसरा सवाल था हमारा कि हमने लैंग्वेज तो सीखने की कोशिश की, अपनी मदर टंग भी, और हमने इंग्लिश या बाकी और लैंग्वेजेस भी सीखने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों में फर्क क्यों होता है? I mean, why do we find कि we are good in talking in Hindi or in any local language, but when we have to speak in English, we find it difficult. ऐसा क्यों होता है?
Yes, I think most of our students they have also these kind of doubts. So through our next discussion, we will try to understand that also. So Rajesh ji, I think इस discussion में जाने से पहले first we have to understand कि what is our mother tongue, how did we learn our mother tongue. तो इसके लिए one more question is there for our participants. You can share the answer in the chat box. कि what is your mother tongue? आप कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, आपके मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है. यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस. राजेश जी, यू कैन ऑल्सो शेयर कि व्हाट इज योर मदर टंग एंड आप बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. जी. Yeah. Okay, Rajesh ji, you have already shared in the chat box also. Okay. Yeah. Yeah. So that is my mother tongue. Okay, Though Bhojpuri. Yeah. हिंदी को भी मैं अपना mother tongue ही मानता हूँ, because Right. that's not much different, and we Right. use Hindi quite frequently. Now see, the differences are coming. Now you have Hindi, Awadhi, Malayalam. Of Right. course, my mother tongue is Bhojpuri, as I have Bhojpuri, mentioned. yeah. My mother tongue is Bangla. So lots of differences are there. Ayushi I'm Garwal, waiting for yeah, Kumaoni, Garhwali, Chhattisgarhi. yeah, These right. languages are not coming. Yeah, I think requesting all participants, you can share in the chat box. That will be very interesting if we know about what language do you speak. Yeah. Angika is something new thing. Yeah, Ritesh, Angika, he has Angika shared. is a language which is spoken in a large part of Bihar. Okay, And great. Ritesh is the native speaker of that language. Right. So most of RB, there is a handle. He or she is sharing Garwali. I think Kumauni, yes, Sakshi Joshi, she has shared. Her language is Kumauni. So Rajesh ji, the point is, we speak different languages in our country. In different states, we have the variety also, and all over the country, I think more than 19,500, that is very interesting data. 19,500 mother tongues are spoken in India. तो इतने सारे लैंग्वेज हैं जिसमें से 22 शेड्यूल लैंग्वेज भी है जो ऑफिशियली कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं. सो there are lots of different languages or dialects in India. इतने सारे वैरायटी है. So in India there is a need of common language through which अगर मैं बंगाल से हूँ और बांग्ला लैंग्वेज बोलती हूँ और अगर मुझे कोई तमिलनाडु में किसी इंसान के साथ बात करनी है, so English is the language through which we can communicate. तो इसीलिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बन जाता है. एज वेल एज यहाँ पे जो पॉइंट पे हम फोकस करना चाहते हैं कि आप लोगों ने सभी ने शेयर किया कि आपके मदर टंग क्या है, कि आपके मदर टंग कुमाऊनी है, गढ़वाली है, हिंदी है, या आप हिंदी भी बहुत सारे साथी यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं. तो ये लैंग्वेज हमने कहाँ से सीखा? हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग? अभी इस बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपने इतने सारे अलग अलग आपके मदर टंग आपने शेयर किया. नाउ लेट्स थिंक कि हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग, कैसे आपने सीखा? इस बारे तो में अभी आप थोड़ा चर्चा ये करते हैं. तो थोड़ा याद करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं याद करूं तो मैंने अपनी मदर टंग कब सीखी, कैसे सीखी, पता भी नहीं है. आई जी. मीन बस सीख ली. जी. अब अगर थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड वी लर्न, तो ऐसा लगता है कि सुन सुन के सीख लिया, बाय लिसनिंग टू अदर्स. डेफिनेटली आई थिंक बचपन में हम हमारे पेरेंट्स को या एल्डर्स को लैंग्वेज बोलते हुए सुनते थे और उसी से हम भी कॉपी करते थे कि मम्मी अगर बोलती है कुछ इधर आओ, तो हम भी ऐसे उनको कॉपी लेकिन करना शुरू दोई करते द हैं. इंटरेस्टिंग थिंग जी. इज कि मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं याद है कि आई वाज ट्राइंग टू लर्न और लर्निंग माय मदर टंग. यस, कभी भी बहुत लैंग्वेज कॉन्शियसली. सीखने की कोशिश नहीं की हमने, जी. वो तो खुद से आ जैसे गई.
या बिल्कुल, आई थिंक वही बात श्रद्धा कुमारी जी भी आपके साथ ही सहमत है, और शी इज ऑल्सो शेयरिंग कि वी अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड दैट लैंग्वेज। डेफिनेटली श्रद्धा जी ने फिर से शेयर किया कि होम एनवायरनमेंट, सो डेफिनेटली राजेश जी की वी थ्रू लिसनिंग वी लर्न दैट लैंग्वेज, कि हमारे जो एनवायरनमेंट था, हम कोई कॉन्शियसली हमें लैंग्वेज सिखाने के लिए हम हमें हमारे मदर टंग नहीं सीखे, but our elders were speaking that language, our neighbors were speaking, our parents were speaking that language, so through listening we adopted that language, we acquired that language. तो यही बात, सेम बात हम भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज हम बचपन से सुनते आए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमने उसको पिकअप किया, एंड देन दैट बिकेम आवर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसी तरीके से हमने हमारे मदर टंग सीख लिया विदाउट एनी मेकिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट। बट Ravi, there is an interesting response from Dr. Minoti. यस, She says that we learn language or our mother tongue through a process of socialization. So if we try to understand what she is saying, तो जैसे हम चलना सीखते हैं, जैसे हम ब्रश करना सीखते हैं, जैसे हम उठना बैठना सीखते हैं, these are all processes of examples of socialization process. राइट, So एग्जैक्टली, similarly, language also comes to us through socializing process. And the interesting part is कि हम कभी भी कोशिश नहीं करते उसको सीखने की, वो खुद ब खुद हो जाता है। एग्जैक्टली, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट हम अनकॉन्शियसली ही उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करते जाते हैं थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। डेफिनेटली, थैंक यू डॉक्टर मिनोती मैम। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ डिड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही हमारे लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज कब आया, कैसे आया, इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। एंड देयर इज अनदर पोल, अ सेकंड पोल दैट विल बी कमिंग इन योर व्हाट्सएप चैट बॉक्स। तो यहाँ पे भी आप कोशिश करिए सोचने की कि इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट एक्सपोजर आपको कहाँ से मिला, वेयर डिड यू फर्स्ट टाइम, वेयर डिड यू गॉट एक्सपोज टू इंग्लिश लैंग्वेज, आपने कहाँ से सीखा। कुछ भी अगर आपके हो सकता है कि इतने छोटे उम्र में आपने इंट्रोड्यूस किया होगा, आपको याद नहीं होगा, बट दैट इज एन असम्पशन, और आपको जो भी एक्सपीरियंस है you can share in the through the poll. Rajesh ji, you can also share ki, what was your first exposure, where did you got your first exposure of English language? Well, first exposure of English language for me was in the classroom. And interestingly, I was introduced to English in class 8. पहली बार Okay, class 8 में मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई. And the kind of exposure was A, B, C, D, not A for apple. वो apple नहीं okay, था just मेरे लिए. It was letters. just, I mean, a list of those 26 letters. And our teacher kept on repeating and asking us to repeat again and again till we memorized it. Yes. So I think definitely when I was it was my first exposure of English language, that was also in school, but that time it started from class 1. तो हमारे कुछ साथी ऐसे ही होंगे कि जिनके फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल से ही शुरू होगा। कुछ साथी होंगे कि जिनके घरों में कुछ इंग्लिश लैंग्वेज to some extent use hota hoga, but most of our participants, they are sharing ki, that was your in school, they started learning English language from their school. So that is the thing we have to understand कि हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो स्कूल से स्टार्ट करते हैं। हमारे मदर टंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, दैट वाज वी स्टार्टेड फ्रॉम, आई थिंक हमारे जब भी हम बड़े होते हैं, just we start acquiring that language from our after we were born. So तब से ही हम वो लैंग्वेज सुनना शुरू कर देते हैं, एंड धीरे धीरे जब बोलना शुरू करते हैं कोई भी बच्चा घर पे, दे स्टार्ट एक्वायरिंग दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे ही एक फर्क दिखता है कि हमारे जो मदर टंग है वो हम बचपन से ही सुनते, वो नेचुरल एक प्रोसेस में ही सीखते आए हैं। बट इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम स्कूल में फॉर्मल एक सेटअप में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं।
So I think इस poll में भी we have got some similar responses कि 84% participants they are sharing कि they got introduced in English language that was in their school only. So now यहाँ पे एक डिफरेंट कुछ सिनेरियो वी कैन सी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज अ वीडियो फ्रॉम अ सिटी पुष्कर दैट इज इन राजस्थान. यहाँ पे काफी टूरिस्ट्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं. दैट इज अ फेमस रिलीजियस प्लेस इन राजस्थान. तो इंडिया में भी ये काफी फेमस है. तो फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखते हैं कि how people in that locality they have acquired English language. And you live here? Yeah, I live here. You live here. I live in desert. Oh, in the desert? Yeah, in plastic tent. Oh, in a plastic tent. Yeah, I don't have house. You speak very good English. Thank you, but I don't go in school. No, No I heard. reading, don't writing, Yeah, just yeah, I talk yeah. English. I come from Holland. Holland. You know Holland? Yeah, Yeah, no, Holland I it's don't. far away. Oh, Yeah, far away. Far away, Yeah. yes. Beautiful place here. Beautiful. But very far this. Yeah, We yeah. not going possible. तो आई थिंक यहाँ तक हम इस वीडियो को प्ले करते हैं एंड यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वन लेडी फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन पुष्कर, शी वाज शेयरिंग कि शी लिव्स इन अ टेंट. तो वही उसी लोकेलिटी में रहते हैं बट शी इज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज. शी वाज आल्सो शेयरिंग कि शी नेवर वेंट टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गए बट शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. राजेश जी, आपको क्या लगता है कि Yeah, how that did was this very happen? interesting. Yeah. Though her English had certain errors, but the kind of lady she is, and she says that I didn't go to school, I didn't read, I Yeah. didn't write, but still she can talk to that gentleman from from Holland in good English. So this is interesting. Now, if she can learn it, तो भी फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए why it becomes so difficult in the classroom? Exactly. So that is the lady is living in an environment where she is getting exposure because of the tourists. She was interacting with those tourists. Like यहाँ पे काफी सारे एरियाज है राजस्थान में, जैसे पुष्कर, उदयपुर. वहाँ पे खूब सारे ऐसे बच्चे या women's होंगे who can speak English, who can understand English language because they have acquired that language from that environment. वहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो कई सालों के इसी एनवायरनमेंट में रहते रहते दे पिक्ड अप दैट लैंग्वेज. तो उनको वो एक्सपोजर मिला है. दैट इज द मेन थिंग कि उनके सराउंडिंग में वो लैंग्वेज मिला और वो सीख गए. Now this is the thing कि how we acquire a language and what is the difference between language acquisition and language learning. कि जो मदर टंग है that we acquire from our surrounding, या कोई भी लैंग्वेज अगर हम हमारे सराउंडिंग में नेचुरल प्रोसेस में सीखते हैं that is acquisition. एंड इसमें ही जब हम देखते हैं कि जब लर्निंग होता है दैट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, कि वो क्लासरूम में या एक फॉर्मल सेटअप में कुछ एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए हम सीखते हैं. सो यहाँ पे मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगी कि एक्विजिशन एंड लर्निंग के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है. तो एक्विजिशन एज वी आर सीइंग कि यहाँ पे इस वीडियो में भी हमने देखा, हम चैट बॉक्स में भी शेयर किए अबाउट आवर मदर टंग. तो जो भी हमने मदर टंग हमने एक्वायर किया है फ्रॉम आवर नेचुरल सराउंडिंग दैट वाज अ इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज. जो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो इंडियन सिटीजन्स सीखते हैं दैट वाज आल्सो who were speaking without going to the school, वो भी उन्होंने एक्वायर किया है फ्रॉम देयर सराउंडिंग. उन्होंने कोई फॉर्मल प्रोसेस में स्कूल में जाके, जैसे राजेश जी आप भी शेयर कर रहे थे, हमने भी ऐसे ही शायद हमारे साथियों ने भी ऐसे ही सीखा है कि लेटर्स पहले सीखे, देन वहां से वर्ड्स सीखे इंग्लिश के, देन वहां से सेंटेंसेस ये सब सीखे, राइटिंग रीडिंग राइटिंग सीखे हैं. दैट वाज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि वहां पे एक फॉर्मल सेटअप में स्कूल में एक फर्स्ट लेटर सीखे, कुछ रूल्स के थ्रू लैंग्वेज सीख रहे हैं. तो ये डिफरेंस एक होता है. देन वही बात जो हम बता रहे थे कि हम
एक्विजिशन जो होता है वो हमारे सराउंडिंग से ही हम पिक करते हैं। बट इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली जो हमारे क्लासरूम में होते हैं, वो बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट होते हैं कि कुछ टेक्स्ट बुक होते हैं हमारे पास, टेक्स्ट बुक के मटेरियल वहाँ पे स्टोरीज पोएम्स जो है वो हम पढ़ते हैं, एंड थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग और कंटिन्यूअस ड्रिल प्रैक्टिसिंग that language, we start learning that language. तो वो एक बहुत ही planned and conscious effort होते हैं learning के। एंड फाइनली कि एक्विजिशन के प्रोसेस में कि हम डेली लाइफ में हमारे डेली लाइफ के जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, वो हम उसी लैंग्वेज में करते हैं इन केस ऑफ एक्विजिशन। एंड इन केस ऑफ लर्निंग हम जब लैंग्वेज सीखते हैं, दैट हैपन टू अचीव सम एकेडमिक गोल कि हमारे एग्जाम में स्कोर क्या आएगा। फॉर टू अचीव दैट गोल, टू गेट गुड स्कोर्स और to learn that language, we start learning English language, or we teach English language in the classroom. तो राजेश जी, ये overall Yeah, difference Doibi, है। this is very interesting and clear also, the distinction, the difference between acquisition and learning, that when we acquire language, इट्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस। इनफॉर्मल प्रोसेस का मतलब यह है कि जब मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब यूज कर रहा हूं, तो मेरा ध्यान लैंग्वेज सीखने पे नहीं है। मैं कुछ काम करता हूं, जैसे छोटे बच्चे जब ये कहते हैं कि मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, टॉफी चाहिए, मुझे फुटबॉल खेलना है, तो दे आर नॉट लर्निंग लैंग्वेज, दे आर सेइंग व्हाट दे वांट टू से। जो उनको कहना है, जो उनको करना है, जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो उनका ध्यान जो है, द फोकस इज ऑन द वर्क और द डिजायर दैट दे वांट टू express or communicate. But when we learn language, the focus is not on communication, not on intent, not on the work, but on learning language. जैसे मैंने बताया, फोकस जो था वो ABCD पे था, वहां कोई डिजायर नहीं था मेरा, टीचर ने कहा और मुझे याद करना है। So this is one major difference, that when we learn our mother tongue, when we learn our first language, it's an informal process. That is, our focus is on our work that we are doing, on the idea or on the desire that we are trying to communicate. When we learn language, our focus is on language, not on the task. Exactly. And of course, the point is equally important, that usually language that is in our surroundings, we acquire it by listening, by speaking, with कोशिश करते हैं सीखने की, न वो कभी कोशिश करते हैं सिखाने की। वो तो बात करते हैं हमसे, कोई आता है, बात करता है, अच्छा बताओ आज तुमको क्या चाहिए, बाजार घूमने चलोगे क्या, एंड द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स। सो नो वन, नाइदर द चाइल्ड नॉट द एल्डर, whether parent or friend or whoever, is interested in teaching learning language. जबकि क्लासरूम में जहां हम फॉर्मली इंग्लिश सीखते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, दैट इज ऑल प्लान। टीचर पहले से अपना लेसन प्लान बना के जाता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि आज मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आज मुझे प्रीपोजिशन पढ़ना है, या सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, या व्हाटएवर। एंड देन, as I said in the beginning, that when we acquire language, we have a goal in life. I want to do something, I want to get something, and to get that, मुझे वो खिलौना दे दो, मुझे वो गुड़िया दे दो, मुझे वो टॉफी दे दो। So this is the goal. I want to achieve the goal, the objective. Whereas in English, the goal is कि टीचर जो सवाल पूछे उसका मैं जवाब दे दूं, क्वेश्चंस क्लास टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में आए तो उनका सही सही जवाब दे दूं और मुझे मार्क्स मिले। दैट इज नॉट अ लाइफ गोल, दैट इज एन एकेडमिक गोल। मुझे एक एग्जाम पास करना है, एक क्लास पास करके दूसरे क्लास में जाना है। सो this difference, Doibi, as you explained very clearly with examples also, is clear to us. And now we have answer to 2 of our questions. We started with 4 questions. The first question was, why do we need to learn English, particularly in India? And then we realized that there are various reasons. Political reasons are there, social practical reasons are there, economic reasons are there, technological, scientific reasons are there. And then we also understood that what is the difference between acquisition and learning. And then we can understand now that our mother tongue we acquire, whereas English
we learn. Probably this has some reason, this has some connection with our difficulty in English. But the question still remains, the third question, that what are the challenges? What kind of difficulties are there? Because as I said in the beginning, कि हम बहुत कोशिश करते हैं, both the students and teachers, to teach and learn English, but still we find it very difficult. ऐसा क्यों होता है, which doesn't happen with Hindi or with any other local language? Yeah. एग्जैक्टली और आई थिंक अभी आगे जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें भी हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली हमने सभी ने शेयर किया कि आवर मदर टंग दैट इज हिंदी और गढ़वाली और कुमाऊनी और डिफरेंट लैंग्वेजेस वी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इज आई थिंक ओनली वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड इन वन क्लास पीरियड ओनली एक सब्जेक्ट का क्लास होता है इन दैट पीरियड ओनली वी यूज और वी got the opportunity to learn English language. तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करें क्यों इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको समझने के लिए अभी हम आगे एक स्टोरी देखेंगे. रचना इज अ स्टूडेंट. She is upper primary class student of class 6, and Rachna is a very active, very energetic student. She takes interest in the class. She is very obedient. Teachers also like her. Now the thing is कि Rachna is very good and active in Hindi classes or maths classes. She takes very good interest. She participates in the activities. वो टीचर्स के पूछे गए सवालों का भी बहुत अच्छे से आंसर करती है. She scores good in Hindi and maths. But in case of English, टीचर ने ऑब्जर्व किया कि she feel less motivated. वो उसके कॉन्फिडेंस भी लो हो जाते हैं, उसके पार्टिसिपेशन भी लो हो जाते हैं. सो नाउ ट्राई टू थिंक कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन. When Rachna is she brings good scores in other subjects. She is more active in other subjects. She takes interest in Hindi, maths, science subjects. But in case of English, she faces difficulty. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उसको मुश्किल होती है क्लासरूम में? तो अभी ये इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, which I think our friends who have joined the session, they also should have noticed that the same student who is good in other subjects, for example Hindi and maths here, is not good in English. So it's not that there is a student who is good or bad. I mean, exactly. One student can be very good in one subject, but the other student can be good in other subjects. So that is the case with Rachna, that she is good in Hindi and maths, but not in English. मुझे तो ऐसा लगता है दीदी कि she is मतलब उसको ठीक से इंग्लिश आती नहीं है शायद, and इसलिए वो participate नहीं करती है. But you say that in English also she scores well. Yeah. So if she has the knowledge, उसको अंग्रेजी भी आती है और उसमें भी उसके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, फिर वो क्यों अंडर कॉन्फिडेंट होगी? Right. While communicating or using English language to ask some questions or to participate in some discussion where she has to use English language, she feel underconfident. She feel less confident कि उसको English language use करना है वहाँ पे. So I think हमारे साथी भी, you can also share your opinion in the chat box कि आपको क्या लगता है कि why Rachna feel these kind of difficulties in the classroom? Maybe our friends will respond. I'm waiting for them. In the meantime, मुझे ऐसा लगता है कि she is afraid कि मैं बोलूंगी तो मुझसे गलती हो जाएगी. Exactly. I will say something wrong either in terms of grammar or in terms of pronunciation, and that's why ऐसा होता है हमारे साथ भी कि कहीं गलत ना बोल दें इसलिए चुप रहते हैं. Right. So इस तरीके के fear is it this और कोई और कारण है? डेफिनेटली सर. तो राजेश जी, जो आप
बता रहे थे कि दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी स्टूडेंट्स यूजुअली फेस इन द क्लासरूम, कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि इफ आई मेक सम मिस्टेक्स तो क्या होगा, टीचर विल स्कॉल्ड मी और अदर स्टूडेंट्स विल लफ एट मी। तो इस तरीके के एक फियर ऑफ मिस्टेक्स तो हमेशा ही होता है। उसके साथ साथ रचना के पास इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपोजर कम होने की वजह से, क्योंकि उसके घर में भी वो हिंदी बोलती है, हिंदी यूज होता है, क्लासरूम में भी हिंदी लैंग्वेज यूज होता है, सो शी हैज वेरी लेस एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक ही क्लास होता है इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल में रोज, तो उसी क्लास में 40 मिनट्स के क्लास में उसे इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता है। सो दैट इज द रीजन की शी गेट्स लेस एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज एंड शी हैज वेरी लेस वोकैबुलरी। तो इतना कम वोकैबुलरी में उसको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो किस तरीके से वो बात करेगी, शी गेट लेस कॉन्फिडेंट इन दैट। तो इसी के साथ साथ उसके मिस्टेक्स, फियर ऑफ मिस्टेक्स भी आ जाते हैं कि अगर मैंने गलती कर दिया व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि वहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता, रूल्स नहीं पता, उस तरीके के जो एक फॉर्मल प्रोसेस ऑफ टीचिंग होती है उसको उसी प्रोसेस में वो सीखती है इंग्लिश। तो अगर कोई गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, इस तरीके की एक उसके मन में चलता है। So, Doibi, now I can understand the challenges or the difficulties that students face. So, the question now जो मेरे मन में बात आ रही है कि yes, English का limited exposure है, because it is not spoken in my house. It is not spoken in my surroundings. मेरे गांव में मेरे आसपास लोग नहीं बोलते हैं, वो तो local language बोलते हैं. Exactly. So, what can a teacher do in this context? कैसे उसका क्या कर सकते हैं, उसका कुछ कर सकते हैं क्या? सारे बच्चों को उठा के हम इंग्लैंड ले जाएं, या लैक ऑफ वोकैबुलरी, उसके पास वर्ड्स कम हैं, तो क्या करें? कैसे उनकी वोकैबुलरी को और एनरिच करें, उसको मदद करें? फियर ऑफ मिस्टेक्स, अब वो गलती करने से डरती है, तो what can a teacher do? Or learned as a subject. So you are suggesting that English should not be learnt as a subject. भाई इंग्लिश भी तो एक सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है. सो आई मीन दी challenges are there. Yes, I do understand. But as a teacher, what can I do? I mean, how can I increase the exposure? मैं गांव के सारे लोगों को तो अंग्रेजी नहीं सिखा सकता. एग्जैक्टली और टीचर के पास ही ये अपॉर्चुनिटी होता है, एंड स्टूडेंट्स आल्सो एक्सपेक्ट कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट टीचर विल गिव द अपॉर्चुनिटी, टीचर विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी और गिव द एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज क्या करे टीचर्स की ये सारे चैलेंजेस ओवरकम हो सके. इट इज वेरी प्रैक्टिकल दैट स्टूडेंट्स विल गेट दैट एक्सपोजर इन द क्लासरूम ओनली, कि उनके गांव में या उनके घर में, उनके परिवार में तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोला जा रहा है. सो व्हाट कैन अ टीचर डू? तो उसके डिस्कशन शुरू होने से पहले देयर इज वन मोर क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट आवर पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर ओपिनियन कि what kind of activities or what kind of initiative will be helpful for these students to familiarize children with English language. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं. यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन और शेयर योर ओपिनियन बाय चूजिंग एनी ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. तो आप बता सकते हैं कि क्या टीचर ऐसे क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज क्या होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपोजर मिल सके, दे बिकम मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश लैंग्वेज. आप चैट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. आई थिंक मनीषा जी ने शी हैज ऑलरेडी शेयर्ड. लेट्स टेक सम मोर ओपिनियन. राजेश जी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? I mean, as I found, आपके पिछली स्लाइड में जो बात हो रही थी कि he or she, Rachna doesn't have enough vocabulary. She is afraid of mistakes. So if I do first, second, and third, she will have more vocabulary. She will have correct rules, तो गलती भी नहीं करेगी. She will memorize the words and their meanings. So that वो भी तो मदद करेगा, because all the answers that are coming except Aditi, all others are saying 4. Exactly, they are going with 4, that is using stories, poems, but games. there is a difference though. Right.
you are not talking about teaching English, you are talking about familiarizing children with English. Now, अगर Exactly. familiarize कराना है, then I think children like stories, poems, games. ये तो मजा आता है, and in the process they will listen to some words. एग्जैक्टली तो आई थिंक जब हम कुछ देर पहले ही हमने वो समझने की कोशिश की कि व्हाट इज एक्विजिशन एंड लर्निंग व्हेन वी लर्न एक्वायर आवर मदर टंग दैट इज एक्वायर्ड नेचुरली कि हम सुनते सुनते अपने मदर टंग को सीख गए. इन केस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि टू इंक्रीज द एक्सपोजर कि बच्चों को फैमिलराइज करे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ. देन दे विल लर्न द ग्रामर रूल्स ऑल्सो, दे विल लर्न रीडिंग राइटिंग एवरीथिंग अंडर आइडेंटिफाइंग द लेटर्स वर्ड्स एंड ऑल थिंग्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज. तो ये सबसे पहला स्टेप होता है. थैंक यू फॉर दिस. आई मीन ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल रही है यहाँ से. See, English we learn formally, so that is actually the learning. But what you are trying to do is now is changing that learning into acquisition. So what will happen when you tell me stories? मेरा ध्यान तो स्टोरी पे होगा, अंग्रेजी सीखने पे नहीं होगा. When you sing a song with me, तो मेरा ध्यान तो वो सॉन्ग गाने पे होगा या कोई गेम खेलने पे होगा. And that is what happens in acquisition. Acquisition में our focus is on the task, on the work, not on the language. So what you are trying to do is, even in the classroom, you are trying to turn learning process into acquisition process. Am I right, Davi? एग्जैक्टली राइटली सेड कि क्लासरूम में भी हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें वेयर चिल्ड्रन forget about learning they should not be conscious about their learning the rules, or they have the pressure of correcting every spellings or every grammatical rules. But through these stories, listening to these stories or enjoying the poems, playing games, they are यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डेली लाइफ कि वो अपने दोस्तों से मांग रहे हैं कुछ प्लीज गिव मी द पेंसिल और प्लीज ड्रॉ अ सर्कल. टीचर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लासरूम में, फॉलो कर रहे हैं बच्चे, कोई पोएम साथ में मिलके गा रहे हैं. दे आर एंजॉइंग द प्रोसेस एंड थ्रू दिस प्रोसेस अनकॉन्शियसली दे आर सीइंग, दे आर लर्निंग द लैंग्वेज. तो जब हमारे एक साथी पहले बता भी रहे थे कि वी अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड दैट लैंग्वेज, तो यहाँ पे भी वी आर क्रिएटिंग that environment where students learn without they will learn the English as a subject, but first they have to acquire that language so that they can communicate. What more can we do? This is good that we can begin with stories, poems, and that will help them give the natural atmosphere where they will acquire rather than learn. But इसके अलावा और क्या कर सकते हैं as a teacher? What can I do to help my students? Exactly. So this section is very important. Now we will talk about कि what can we do in the classroom. कि ये तो एक reality है कि काफी 7 to 8 सब्जेक्ट्स बच्चे एक दिन में क्लासेस होते हैं. 6 to I think 6 to 8 क्लासेस तो ऐसे होते ही है. उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ना होता है. बट इन दैट प्रोसेस ऑल्सो हाउ कैन वी क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि बच्चे क्लासरूम में ही लैंग्वेज एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिले. सो इसके भी लिए भी वी कैन सी वन वीडियो, वी कैन वॉच दिस वीडियो अ फ्यू पोर्शंस कि ये जो टीचर है, टीचर ने किस तरीके के एनवायरनमेंट क्रिएट किया टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लासरूम. Primary class. Today we will learn. In this upper primary class, a teacher uses natural resources creatively to enhance her lesson. Here, she is teaching English by using a topic from science. Using locally available materials connects students' lives to the curriculum. We will learn the parts of plants. अब हम क्या करेंगे? ग्रुप में वर्क करेंगे and we will go outside and pick some object. जो कि object I will give you 10. In groups, they use these resources to practice their vocabulary
and spelling. Bringing in resources from outside can provide objects for discussion and for interesting classroom displays that can be referred to while teaching. Everybody know their group? सब जानते हैं ना अपने अपने ग्रुप? मैं कुछ Every क्वेश्चन group make a दिखाती हूँ leader. इस वीडियो से. अब आप लोग डिस्कस करेंगे, है ना? After the group work, the teacher conducts a feedback session. What is this? Leaves. A leaf. A leaf. Leaves. So यहाँ तक कि मैं प्ले करती हूँ इस वीडियो को. So we can see कि definitely the topic was from science or about plants, but the teacher was using that topic in English language classroom and created that opportunity कि students can work in group, they go outside in the classroom, they explore together, they communicate. Writing भी हो रहा था, vocabulary भी हो रही थी. All things were happening together in that classroom. Rajesh ji, what is your opinion about this video? Yeah, this was quite interesting. I mean, the teacher is not talking about English. She is not teaching English. She is talking about plants and asking children to go out, बाहर से कुछ चीजें plants की collect करके ले आओ. And in the process, she is using English vocabulary. कि this is a leaf, Exactly. that these are flowers, these are branches, these are seeds. So, I mean, again, the same thing as I said earlier, कि a formal teaching learning situation is being turned into acquiring a language. Because now अभी बच्चों का सारा ध्यान जो है वो प्लांट्स की चीजें कलेक्ट करके ले आने और उसके बारे में कि मैं लीफ लेके आया हूँ, मैं फूल लेके आया हूँ, मैं ब्रांच लेके आया हूँ, फोकस वहां है. So they do not realize that they are learning English, they are using English. So that way teacher seems to be very successful as I understand. Exactly. और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि मतलब टीचर इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चों को सिखा भी रहे थे. As children, these children were saying कि this is leaf, but teacher was correcting them कि these are leaves. When more than one leaf is there, तो वहाँ पे leaves use होते हैं. So in this process they are learning that language. तो यहाँ पे ही हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस एक्टिविटी में टीचर का फोकस क्या था. आप चैट बॉक्स में अगेन आई विल रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, यू कैन शेयर कि आई थिंक यू हैव वॉच दिस वीडियो, यू हैव अंडरस्टूड थ्रू आवर डिस्कशन व्हाट वाज हैपनिंग इन द क्लासरूम. नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी. टीचर का फोकस कहाँ था, टीचर क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे क्लासरूम में. ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इनमें से which objective was not the teacher was not focusing on which of these objective. आप जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है you can share in the chat box. राजेश जी, आपको क्या लग रहा है? ये तो primarily मुझे लग रहा है in this activity, though other things can also be there. They are using English language, so I mean they are talking with their friends, with their peers. Yes. They are listening to teacher and responding to the questions of the teacher also. Of course, they are using the words like leaves, flowers. But there is no discussion about grammar or grammar rules. So I will say with Ayushi, Aditi and Manisha, I will go with them. Thank you, three of you, for helping me. So answer in my case will also be the same as they have suggested, number 2. Exactly. So the teacher created that environment where children got the opportunity to talk in the classroom. They were talking with their peers. They were discussing कि कौन से objects उन्होंने collect किया. They were trying to identify the parts of the plant. They are writing on their notebook. So ये सारे activity हो रहा था. They were learning vocabulary about the plants. Then वो teacher question पूछ रहे थे. They were trying to answer the questions. So इसी process के
के थ्रू दे वर एक्वायरिंग दैट लैंग्वेज। उससे हो सकता है कि वहां पे भी बच्चे ऐसे कुछ कम ज्यादा पार्टिसिपेट करें, सम चिल्ड्रन विल बी मोर एक्टिव, दे विल पार्टिसिपेट मोर, बट the teacher was trying to encourage everyone to to use English language in the classroom. So So, that Dolby, is the your ideas that you have shared in last two examples are very interesting, and now I'm curious to learn quickly about some more such ideas which I can Exactly. use in the classroom, जो हमारे students की। तो और कुछ ideas आप हमें बता सकते हैं क्या, जो हम classroom में कर सकते हैं? एग्जैक्टली तो हम अभी कुछ आइडियाज ऐसे क्विकली शेयर करते हैं which are applicable for primary, upper primary classes, or as per the class level teacher can do these kind of activities. So first of all, to introduce English language, to make more familiar with English language, teacher can use stories and poems. So stories, while a teacher tells stories with lots of expressions, interaction, question answers के साथ, so in that process also children learn English language, they learn the vocabulary through expressions, they try to comprehend the story. तो इससे ये एक बहुत अच्छा process है to give more exposure. Then singing rhymes and songs, that is also very important, कि जब teacher कोई rhymes and songs बच्चों को सुनाते हैं in English language, children the teacher can ask children to repeat after the teacher. तो टीचर को इमिटेट करते हुए, टीचर को फॉलो करते हुए, दे लर्न द वर्ड्स, दे लर्न हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। तो इसी तरीके से बच्चे भी इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर होते जाते हैं। देन उसके बाद teacher can use different audio, video or pictures in the classroom to give more exposure of the language. Videos का अभी सभी के पास ऐसे फोन होते हैं, schools में भी, काफी सारे schools में भी, most of the schools they have projectors, they use these projectors for teaching and learning process. तो ऐसे वीडियोस काफी सारी यूट्यूब में भी अवेलेबल है विच आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों के एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। I mean, you are suggesting that we can use pictures, audio, video और वीडियो तो समझ में आ रहा है, बच्चे सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे, शायद रिपीट भी करेंगे। पिक्चर के साथ how can a teacher work? Can you suggest something? Exactly. और पिक्चर्स के साथ राजेश जी lots of things can organized in the classroom, can be arranged in the classroom, कि एक ही पिक्चर के साथ टीचर कैन फॉर्म अ स्टोरी, टीचर कैन डिस्कस विद स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार डिस्कशंस क्लासरूम में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि ऐसे पिक्चर्स टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएंगे, गूगल सर्च करके भी ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हो, कलर्स हो, बहुत सारे lots of things are happening in that picture, lots of activities people are doing. तो ऐसे pictures select करके you can discuss with students, start a discussion with students. First of all, definitely lots of vocabulary can be learned from this picture, कि जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में खूब सारे ऑब्जेक्ट्स, खूब सारे कलर्स, पिक्चर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं। यू कैन टॉक विद चिल्ड्रन अबाउट दीज थिंग्स, सो दिस विल एनरिच देयर वोकैबुलरी। नाउ हाउ टू स्टार्ट अ डिस्कशन यूजिंग दिस पिक्चर, इसके लिए आपके पास एक क्लू भी है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, योर फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि यहाँ पे नीचे आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट वन क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चन कैन स्टार्ट अ डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, कि बच्चे आपस में, टीचर एक डिस्कशन स्टार्ट कर पाए कि अच्छा बताओ इस पिक्चर में क्या हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरे बच्चे भी अपने ओपिनियन शेयर करें, ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जिससे ऐसे एक्टिविटी किया जा सकता है। सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चन। यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स, you can share your answer in the chat box. राजेश जी, what is your opinion about these pictures? ये आपके सवाल जो है, if I try to answer these questions, if you ask me is there a cat, I will say yes there is a cat, क्योंकि मुझे वो बिल्ली तो दिखाई दे रही है। Yes. और I what think is the color of the bus? Exactly. बस का कलर तो रेड है। Yeah.
Again, the Uh, conversation is just, it is a complete yes or no yeah, question. you are asking a question and I'm giving you the answer. What do you think Yeah. about the watchman? Now, इसका जवाब तो मुझे कुछ बताना पड़ेगा. For example, watchman could not sleep last night. He is very tired, so he is sleeping in the park. ये मैं Okay. कह सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सोता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा सा He is मुंह खुला हुआ tired. है. Yeah. Exactly. Or maybe he is lazy, or maybe he is tired. He Yeah. has not slept And the last last night. question, Doibi, is Exactly. there a lady walking with an umbrella? So yes, there is a lady walking with an umbrella. I can see that. So I mean, Doibi, this is quite interesting. I mean, we can ask different types of questions. Now, if students Exactly. can answer just in one word or yes, no kind of thing, अगर हम क्लास 2-3 के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो इसी पिक्चर पे हम वैसा सवाल भी कर सकते हैं. Is there a cat? Is there a man? Is there someone who is selling fruit or something like that? And agar if we are working in class 6, 7, where students can use a sentence, speak a sentence, then we can use the third question also. What do you think about the watchman? So the answer is discussion is possible with question number 3. Exactly. So I think we have received two different opinions. Ayushi, Pooja, Lata ji, they are sharing ki they are going with number 3. What do you think about the watchman? And Aditi, Shivani, Divya, they are going with number 4. Is there a lady walking with an umbrella? So we have received two Doibi, I different mean, opinions. with question 4, Yeah. this is a good question and we can use that. But discussion इसमें कैसे होगा? You are asking a question, is there a lady walking with an umbrella? And I'm saying yes, there is a lady walking with an umbrella. So Yes, after इसमें that, I think discussion तो नहीं हुआ, close हो जाएगा ये. exactly. Exactly. ये क्लोज क्वेश्चन है और हो सकता है कि उसके आगे डिस्कशन आगे ना बढ़े. बट द थर्ड क्वेश्चन दैट इज अबाउट that can if we ask this kind of question in the classroom, different opinions can come from that children. Someone can say ki the So watchman is Doibi, lazy, now the I watchman is understand tired. how to use picture in the classroom. Exactly. Now, can you give me some more, because it's बहुत मजेदार हैं आपके ideas जो हैं, they are very interesting and I can see that next Exactly. time when I work with children I will use some of them. So मैं जल्दी आपसे खूब सारे ideas ले लेना चाहता हूँ. So can you help me with some more quick ideas? Exactly. तो इसी तरीके से like we have talked about lack of vocabulary. So बच्चों को vocabulary introduce करने के लिए we can use the word cards and picture cards also. तो इसके लिए I think classroom में खूब सारे objects होते हैं. Very easy and simple activity we can do to increase their vocabulary कि classroom में जो भी objects है उसको ऐसे cards बना के उनको उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप पेस्ट कर दें, लाइक फैन, लाइट, डेस्क, टेबल, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा. एंड उसके बाद आप कर सकते हैं कि एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद यू कैन शफल दोस कार्ड्स की ब्लैक बोर्ड के ऊपर फैन लगा दिया, फिर डेस्क के ऊपर ब्लैक बोर्ड लगा दिया, एंड बच्चों को आप वो टास्क दे, वो गेम की तरह ही उसको शफल करें. नहीं, ये तो गलत लगाया मैम आपने, ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना है, ये तो डेस्क है, तो आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ. तो इसी गेम के प्रोसेस से बच्चे वोकैबुलरी सीख जाएंगे. सो दिस इज वेरी सिंपल एक्टिविटी. यू कैन ट्राई ये इन द तो मैं अपने क्लास क्लास में भी जरूर करूंगा and this seems very easy and Exactly. imagine the situation when my students will be correcting my mistakes. तो उनको बहुत Exactly. मजा आएगा. आई रिमेम्बर जब मैं भी अपने टीचर की किसी चीज को गलती की तरह बताता था. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली टीचर वाज डूइंग इट इंटेंशनली. Exactly. तो बच्चों को to help बहुत me मजा learn. आता है. Exactly. और कोई गेम बता सकते हैं भी आप एक और इस तरह का? गेम है जैसे डायरेक्शन का गेम. वी ऑल आई थिंक वी ऑल हैव प्लेड दिस गेम की साइमन सेज या ऐसे
नेताजी कह रहे हैं तो वो डायरेक्शन एक जन देते हैं और बाकी ऑल द पार्टिसिपेंट्स दे फॉलो द डायरेक्शन। तो इसके लिए ऐसे कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ पुट योर लेफ्ट आर्म अप और टच योर नोज, टच योर आईज, या टर्न एंड फेस साउथ। तो अगर आपको डायरेक्शन सिखाने हैं तो आप ऐसे गेम यूज कर सकते हैं कि टर्न एंड फेस साउथ, साउथ की तरफ आप मुड़ जाए। देन टेक 2 स्टेप्स टू द वेस्ट, कि ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आप अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों को जंप करने के लिए कहे। यू कैन आस्क देम टू टेक 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप बैक। इस तरीके से जो भी डायरेक्शन के गेम है बच्चों को फॉलो करने के लिए कहे। जो नहीं फॉलो कर रहा है वो बच्चे आउट हो रहा है, ये हो सकता है कि जो आउट हो रहे हैं उसको वापस से डायरेक्शन देने हैं। ऐसे गेम को क्लासरूम में आप प्रमोट कर सकते हैं, थ्रू विच दे विल डेवलप लिसनिंग स्किल्स और फॉलोइंग डायरेक्शन स्किल्स। तो इसी दिस इज वेरी जी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, there is very limited opportunity to listen to English language. एग्जैक्टली क्योंकि अंग्रेजी हमारे आसपास बोली नहीं जाती, so either we read or write or we speak. When teachers ask the question, we give the answer. But listening के chances बहुत कम मिलते हैं, और वो भी real life listening. Now here what is happening is that I have to listen to the teacher, understand what she is saying, and then do accordingly. Suppose she is asking me to turn east, और अगर मैं नहीं समझता हूं तो शायद मैं नॉर्थ की तरफ घूम जाऊंगा. So the teacher will come to know that this child has a problem. So this again is an interesting game, Doibi. एग्जैक्टली तो इसी तरीके के अलग अलग टाइप के गेम हम क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जैसे इसका तो हमने ऑलरेडी आंसर दे ही दिया है, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। कि एक लैंग्वेज रिच क्लासरूम हम किसे कहते हैं, जैसे कि हम अभी से बात कर रहे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग कि इंग्लिश लैंग्वेज we have discussed about the need of English language कि social, political या science and technology, higher studies के लिए we have to learn English language. Then we have talked about our environment कि हमारे environment में वो opportunity बच्चों को नहीं मिलता है. So in the school, in the classroom, we have to create the environment, we have to give them the opportunity to use English language. तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही स्टोरीज, पोएम्स, इन सारे तरीकों से, गेम्स, इन सारे तरीकों से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दे। क्लासरूम में डिबेट हो सकता है, कोई ग्रुप एक्टिविटी, एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज के थ्रू टीचर बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज। देन प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में बहुत जरूरी है कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज अपने आसपास में दिखे, उनके इंग्लिश के वर्ड्स बच्चों को पढ़ने को मिले क्लासरूम में। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो वर्ड्स सीख रहे हैं वो अपने आसपास में देख भी रहे हैं, हाउ टू यूज दिस वर्ड्स। सो इसी तरीके से वो उनके वोकेबलरी एनहांस होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होते जाते हैं। एंड डेफिनेटली कि हम जब भी कोई क्लासरूम में एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट शुड बी इन ग्रुप्स। बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी, एक्सरसाइज दे सो दैट दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो रिक्वेस्ट करना सीखे, दे लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, दे लर्न टू आंसर क्वेश्चंस। सो इस तरीके से वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज क्लासरूम में करें। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया कि क्लासरूम में आप वर्ड कार्ड यूज करके शफल करके दे सकते हैं, या डायरेक्शन का गेम खेल सकते हैं कि जो बच्चा आउट हो जाएंगे उसको डायरेक्शन देने हैं। ऐसे ही आप अलग अलग एक्टिविटी क्लासरूम में प्लान कर सकते हैं टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी कि बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें क्लासरूम में। सो दीज आर द थिंग्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम। जी राजेश जी। So, Devi, please. जी, so I think Rajesh जी, we are talking about answering 4 questions। जब आपने start किया था कि आप बता रहे थे कि today in this session we will talk about 4 questions and we'll try to find answers of this question। तो I hope कि इन questions का answer आपको मिला होगा। Yeah, Doibi, really we are very happy to attend or participate in this discussion today.
So these 4 questions that we started with, now I can say that I have answer to all these 4 questions. That English is needed in India because of social, political, economic, scientific, technological, and several other types of reasons. Acquisition and learning are different in the terms of being formal and informal. That is, in acquisition, the focus is on the task, on the real life goal, whereas in learning, the focus is on the language and it is learned consciously. Challenges are there. Yes, challenges mainly are related to the exposure. We do not have the opportunity to listen to or to speak English, to use English. And besides that, vocabulary is the challenge, rules of grammar or fear of mistakes. These are the issues. But I think all these issues come only because we don't have the opportunity to listen to and use that language. Exactly. And then in all the activities, your activities were very interesting, very simple activities, जहाँ ऐसा कुछ नहीं है टीचर को जिसमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी हो, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करना हो. I mean, with simple efforts, with sheets of paper and things like that, or pictures or whatever, it can be done. Activities. Yeah, and in all these activities, what we were trying to do is ensuring that they get more and more exposure. चाहे वो उनको पढ़ने के मौके मिले, चाहे सुनने के मौके मिले, चाहे बोलने के मौके मिले, चाहे लिखने के मौके. So I mean, the principle, as I do understand from your help today, is that when we are teaching English or any other foreign language, the focus should not be on teaching A or B or C lesson. The focus should be on giving more and more opportunity, more and more chances of using that language. And this is what you meant. Now I understand that English should not be taught as a subject. It should be taught as a language. Yes. So when you teach something as a subject, तो फिर आप उसमें rules बताते हो, concepts बताते हो, theories बताते हो, definition बताते हो. In language, these things are not important. What is important is how to read, how to speak, how to write, and how to listen and understand. So जोय भी आपके इस सेशन में हमें मजा आ गया. नाउ इससे अगर आगे चले सेशन को कंक्लूड करने के लिए, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप हेल्पलाइन के थ्रू जुड़ सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन सी क्लैरिफिकेशंस, यू कैन सजेस्ट अदर टॉपिक्स जिस पे आप बात करना चाहते हैं. एंड दीज सेशंस दैट we conduct it weekly. Every week there is a session, and besides that we have videos and we have YouTube cuts also. So if you come to our YouTube channel, EdIndia's YouTube channel, you'll be able to see our earlier sessions also, which you might not have attended live, or you might have missed for this reason or that reason. For this particular session, your feedback will be very important for us. So through the chat box, the link is being shared with you. I would request all of you to click that link, go to the page that opens, and give your feedback, opinion about the session, and then your suggestions for improvement, because that will be very important for us to improve the quality and relevance of our session. So thank you, Doibi, particularly for your help to help us understand this difficult issue of English language teaching in India. And thank you all the participants from Chhattisgarh, from Uttarakhand, and from other states where they have joined. Thank you for your participation. Hope to see you again. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh.